Okay. Now, we'll start with circle. Can anybody tell me what is a circle? Collection of points. When you see curves, right? When I move the sketch, I've moved my sketch, so a path has been created, right? It can be of various things. It can be this path, right? We can have infinite paths. Even if you see the shooting stars, it has a path. If you see rockets in the sky, it has a path. When you draw anything, it has a path, right? So circle is also a special type of path, right? What is the speciality of this path? Every point has equal distance from the... So there must be a fixed point, right? There must be a fixed point, and we are going to call this fixed point as center. So the fixed point is going to be called as center, and I'll say a moving point. What I'll say? A moving point, like my rocket or my pencil or anything, which is at the constant distance. They are on the same distance from. So this is basically a collection of points. So we call this collection of points as circle, or we can say the locus of this moving point. Which moving point? Which moving point? Which has a constant distance from a fixed point O, and we are going to call this fixed point as center. So everybody understand what is the definition of circle? So basically circle is the locus. Locus means, locus can be anything. Locus like information. Locus is like information of your path. If I say go to IIT Delhi, so if I tell you move out from infinity, take right turn, go 2 kilometers on the right, then 3 kilometers on the left. So basically what I am telling you, the locus to reach IIT Delhi. So locus can be of any information. It can be in the form of maps, it can be in the form of sketches, it can be in the form of information, it can be in the form of poems, it can be in the form of puzzles, right? तो मैथमेटिक्स में लोकस 3 तरीके से लिखे जाते हैं. एक एज ए कर्व स्केचिंग, जो हम लोग ग्राफ बना के रख रहे हैं. दूसरा होता है इक्वेशन की तरह लिखते हैं, ठीक है. और तीसरा होता है पैरामीट्रिक, जो इसे हम लोग बाद में पढ़ेंगे, राइट. तो अभी फॉर अ टाइमिंग आपको बस इतना जानना है कि सर्कल इज अ locus of a point locus of a moving point such that distance of a moving point from a fixed point is constant, and that fixed point is called center. And the length of this fixed distance, we call it radius. Okay, so everybody understand center, everybody understand radius, and everybody understand circle, right? इन तीनों डेफिनेशन में किसी को इशू नहीं है? सबको समझ में आ रहा है ये 3 चीज? ओके. Now, this is a line, okay? This is a line and this is a circle. Now, this line can either be outside the circle or just touching the circle or cutting the circle, right? यही 3 केसेस होंगे ना लाइन के. या तो लाइन टोटली आउट होगा, या टच कर रहा होगा, या कट कर रहा होगा 2 पॉइंट्स पे, राइट. इसे हम कहते हैं, इस लाइन को कहते हैं सीकेंट. तीनों लाइन को हम सीकेंट ही कहेंगे, राइट. तीनों क्या है? सीकेंट ही एक तरीके से. बट ये सीकेंट क्या बन जाता है यहां पे? टैंजेंट. और ये सीकेंट जो ये दो पॉइंट पे कट किया है, तो ये एक्चुअली क्या है? ये लाइन है या लाइन सेगमेंट है? सो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ बिटवीन लाइन एंड लाइन सेगमेंट? Line segment has fixed points and they have a fixed length. So we call this fixed line as chord, right?
So you understand what is chord? So chord is basically if you take any 2 points on the circle and draw a line, that line segment becomes your chord. यहाँ तक कोई problem नहीं है? So we have already learned what is circle, what is center, what is radius, and what is chord, and what is tangent, right? We have understood these 5 terms. इसमें कोई problem नहीं किसी को? Okay, good. Now, we are going to observe this circle whose center is origin. Now I am going to draw a chord, right? Now if I say AB is my chord, right? So I'll just connect this radius. OB would be a and OA would also be a radius, right? Okay, now let's say some angle must be subtended by this chord, right? So we call this angle as theta, which is called as central angle. Central angle subtended by chord AB. So you understand what is central angle? What is central angle? The measure of the angle subtended by chord, right? If you connect this angle becomes your central angle, right? Now they say, let's say another chord CD. Okay, they will also subtend some angle, right? Clear? Now this angle would be, let's say, alpha. So angle subtended by AB is theta and angle subtended by CD on center is alpha. Now let's say if they say they are equal chords, what does it mean when they say? Means they are equal in length, right? These two chords are equal in length. So which means, so theta would be equal to alpha, right? So when I say if AB is equal to CD, then how can you say this? Simple congruency, you know this and this, they all are radius. So basically you have all the 3 sides equal. So when corresponding 3 sides are equal, what does it say? SSS congruency, right? So we can say theta is equal to alpha. Okay, if I say if theta is equal to alpha, then vice versa is also true. Why vice versa is true? Because of which congruency? SAS, right? Side, angle, side. Clear? So you understand what is central angle and you understand when they are equal, right? You understand these relations? Very good. Now tell me, should I rub this? Okay. मैं इधर बना रहा हूँ, जो जिसे नोट करना है वो नोट कर सकता है. Now let's say now you see AB is your chord, right? And theta is the central angle subtended by chord AB, right? Now tell me, this chord has divided your circle in 2 segments, right? Segment means part.
सेगमेंट मतलब अंग्रेजी में सेगमेंट पार्ट्स को कहते हैं, राइट? सो बेसिकली योर सर्कल हैज बीन divided into two segments. One segment is this, a smaller segment, and you have a bigger segment. If this chord would have been a diameter, then you would have got two equal segments, which is basically semicircles, right? So when it is not diameter, you will always get your two types of segments. One it is minor segment, the other one is major segment. So whatever the properties we are discussing, it's very important till class 12. So please be focused here. Now you see, this is your major segment and this is your, this is your major segment and this is your minor segment, right? So you understand why it is major segment and why it is minor segment. Now this chord AB can take any points on this line. This is called major sector, right? This, what is major sector? If I draw with blue pen, what would be the major sector? This shaded portion would be my major sector, right? And this would be my length of major sector. And this would be my minor sector, right? Clear? Understood? To understand between segment and sector, फर्क पता चल रहा है sector और segment का? Okay. Now tell me, if I choose any point, I can choose any point on the major portion. So that angle is called inscribed angle. Inscribed angle. So alpha is basically inscribed angle. Inscribed angle of AB in major segment. ठीक है? Alpha is equal to inscribed angle, which is called angle in major segment. Clear? Similarly, you can have infinite options for the this also. If you choose this point as D, this will be some angle beta. You are going to call this angle as inscribed angle in minor sector, minor segment, right? तो आपको inscribed angle का concept समझ में आ रहा है. Now just tell me, what is the relation of alpha and theta? Two up. Can anybody tell me why? Okay, we'll discuss that also. And what is the relation between theta and beta? 180 minus, will come to cyclic quadrilateral. I am just asking the relation of theta and beta. 180 minus theta by 2, right? 180 minus theta by 2. We'll just prove it, why it is true. How many of you know the proofs? 1, 2, 3. Okay, 3 people know, the rest of the people doesn't know, right? So we'll just discuss why it is true, right? Okay. But everybody knew this property, right? Okay, good. So we'll say AB and this as origin, and let's say this is theta, okay. We have to prove that this angle is half of this angle, right? So what we are going to do is we are going to connect. Can we do this? Right? Clear? Okay, just tell me, this and this sides are equal. So what this triangle is called? Isosceles triangle. So this is theta. So what will be the sum of 3 angles of a triangle? 180. So can I say this is actually equal to 90 degree minus theta by 2? And can I say this as minus theta by 2, right? We can say this? Clear? Okay. Now,
If I say this angle as A, can I call this angle as A? And if I say this angle as B, can I call this angle as B? Because these three are isosceles triangle, and we know that sum of angles of a triangle is 180 degrees. So I can say this angle plus this angle plus this angle would be equal to 180 degree. So I can say A plus B plus A plus 90 degree minus theta by 2 plus B plus 90 degree minus theta by 2 is equal to 180 degree. Everybody understand this? So we have 2A and we have 2B minus theta is equal to 0 because 180 would cancel out. Clear? So we can say 2A plus 2B is equal to theta. So we can say A plus B ka twice is theta. So we can say A plus B is, which is my inscribed angle. Understood? Clear? So it was easy. It was very easy to prove. Now just tell me how to prove that this angle is 180 minus this angle. We have to prove this. है ना? How to prove this? You know, if I say this is A plus B, I'm going to call this now as theta by 2, right? So we have to prove that this angle is, कैसे होगा? वो तो बाद में पता चलेगा, अभी तो हमने साइक्लिक कोऑर्डिनेट डिस्कस ही नहीं किया है, राइट? कैसे पता चलेगा ये? कितने लोग, हाँ, क्या करेंगे आप? क्या आप ये क्या करेंगे? कनेक्ट कर देंगे। ओके, कनेक्ट कर दिया। What? No. Instead of connecting this, I'll connect CD. I'll connect CD, right? I can connect CD. So, you know that if this chord is making inscribed angle alpha here, it will also make alpha here, है ना? जितने भी inscribed angles होंगे वो alpha होंगे, right? इतना तो सबको पता है. Now, if you observe this chord, it will be some angle, let's say P, and it will be some angle Q, right? It will be P and it will be Q. So this is P would be equal to this P, and this Q would be equal to this Q. And what is this? And hence this plus this would add up to 180 degree, and thus we call. So now comes the term cyclic quadrilateral, that basically if you choose any 4 points on a circle, obviously 4 points would create a quadrilateral. That quadrilateral is called cyclic quadrilateral, and thus that cyclic quadrilateral will always have opposite angle sum as 180 degree. This is the solid proof, right? You knew it, but you don't know why it is coming. Now you know it. Understood? पक्का? Clear or not clear? आप जो कर रही हैं ना, वो एक स्पेशल केस है जब ऐसे पास कर रहा है। हर आपका तो इंस्क्राइब्ड एंगल यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो फिर ज़रूरी थोड़ी है कि वो सेंटर से पास हो रहा हो. दैट लाइन कैन बी डायरेक्ट, राइट? सो दिस इज द वे वी आर गोइंग टू प्रूव. क्लियर और नॉट क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? दीज वर और क्लास 9th स्टफ्स, राइट?
Okay, आगे बढ़े. So just look into the properties which we have discussed. How many properties we already know? So first property says equal chords of a circle subtend equal angles at the center, right? Everybody understand that? If the angles subtended by the chords of a circle at the center are equal, then the chords are equal. We have already discussed. The perpendicular drawn from the, okay. Can anybody prove this? Third line, third property. What is the third property? It's very easy to prove, right? This is your, just understand the term. This is your center, this is your chord, and this is your radius. And what the question says? The question says, the statement says, the perpendicular drawn from the center of the circle. So basically this is a line. So basically this is height. Basically this is a height. What is the height of a triangle? The shortest distance from vertex to the base, right? तो altitude आपको पता है क्या होता है triangle का? Vertex से opposite side पे जो perpendicular बना रहा होता है. And what is, अच्छा ये तीनों terms सबको पता है कि नहीं पता है? Median, angle bisector, altitude, of a triangle. पता है ना सबको? Right, median is just vertex to the middle point of opposite middle point. That is median. Now second thing is angle bisector. The word suggests itself. The internal angle bisect किया उसे हम internal angle bisector कहेंगे. Bisect मतलब दो equal हिस्से में divide करना, right? और external मतलब external angle कौन होता है? 180 minus internal angle, right? उसको जब आप bisect करते हो तो 90 minus half हो जाता है वो, clear? क्योंकि वो 180 minus वो हो गया, right? ये बात समझ में आ रहा है ना? This is your triangle. If I call this as internal angle, this would be, and this would be your external. So इसको जो divide करेगा line, इस रे को हम कहेंगे angle bisector, internal angle bisector, और इसे जो divide करेगा इसे हम क्या कहेंगे? External angle bisector, right? So you understand internal angle bisector, external angle bisector. Altitude क्या होता है? The shortest distance from vertex to right. And what is perpendicular bisector? Right. Perpendicular plus bisector. Perpendicular plus bisector. So this line is perpendicular. We don't know whether it is bisecting or not. And if we prove that it is also bisecting, it means it will be a perpendicular bisector, right? So we know this and this is equal, which means this and this equal, which means both have 90 degree. This common side, which congruency? RHS congruency. So we can say, so yes, right? Understood? So we can say the perpendicular drawn from the center of the circle to a chord bisect the chord. The line drawn through the center of circle bisecting a chord, again it's vice versa. I don't know what is it, what this angle is, but I know these two are bisecting. This is equal. So SS congruency say we know these two angles are equal and they are linear pair as well. So they will turn out to be 90 each, 90 each, right? Clear? Okay. So equal chords of a circle are equidistant from the center. We have already discussed this. Chords equidistant from the center of circle are equal in length. If two chords of a circle are equal, then the corresponding arcs are congruent, and conversely if two arcs are congruent, then their corresponding chords are equal. इसका मतलब समझ में आया? How many of you couldn't get this statement? Okay.
देखो अगर तुम कहते हो ये तुम्हारा सर्कल है और दो इक्वल कॉर्ड्स ले लो, एक ये कॉर्ड हो गया ए बी और एक कॉर्ड ये ले लो सी डी, यही होगा ना। सो दिस एंगल इज अल्फा, सो दिस विल ऑल्सो बी अल्फा बिकॉज दे आर इक्वल कॉर्ड्स, विच मीन्स दिस पोर्शन would be same as, what does congruent mean? आप एक के ऊपर दूसरे ऊपर को टोटल ओवरलैप कर सकते हो, that is the only thing he wants to say, which means central angles are equal, which means radiuses obviously are equal, which means this sector is also equal, right? This portion, the length of the sector is also equal. We'll discuss how to find length of the sector in next chapter. So ये समझ में आ रहा है? Okay. Now So you have missed 1 point, 5th point. 3, 4, 5. There is one and only. Okay. Now let's say this is a very, very important point I missed. Very important conceptually. You have, they want to say that you have 3 non-collinear points, and he wants to say that only one circle, there is only one circle which can pass through these 3 points. There would never be any other circle which is passing through these 3 points, right? So what he wants to say, let's say this is your circle, right? 3 points passing through, right? Now if you connect this, let's say, I'll just show you this. If you connect them, they are creating a triangle, right? Now if you draw a perpendicular bisector, this is a perpendicular bisector, this is a perpendicular bisector, and this is a perpendicular bisector. What do you see? You see they all are concurrent and meeting here. Now if you observe, this becomes your chord which has a radius, right? Now if you observe, this is your center, this is your radius. Clear? So which means they will always create a circle. Clear? Unique circle ही होगा जिसका center ये है और radius r है. If you say the center is fixed and the radius is fixed, it means it will be overlapping. So it will be the same circle. So 3 non-collinear points will always create one unique circle. ठीक है, आप कैसे भी चूज कर लो. आप बोलो सर ये राइट, तुमने ये चूज कर लिया, क्लियर. तो मैंने कहा इसे ट्रायंगल बना दो, बना दिया. Now this is a chord of a circle. Consider this as a chord of circle. This will be a perpendicular bisector, and then perpendicular bisector. They all will be concurrent. Why? Because perpendicular bisectors are concurrent, which means this is the point of intersection of perpendicular bisectors, which means these are radius. You will have a unique circle passing through them, which has a center, this, and radius, its distance from it. Clear? We have already proved why the distance are equal. Understood? You can say prove it कि अगर ये और ये मिल रहा है, let's say, आप ये आर्ग्यू कर सकते हो ना कि ये आपका ये है, राइट? आपने कहा ये मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. हाउ कैन यू से दिस इज योर सेंटर? यू कैन आर्ग्यू दिस, दैट हाउ यू कैन से, क्लियर? तो तुम इसको ऐसे कह सकते हो कि since you know these are your perpendicular bisector. Understood? Now just tell me, this is 90, this is 90. Clear? This is 90 and this is 90. This and this would create how much angle? 180 degree, because this is a quadrilateral, which means it is a cyclic quadrilateral, which means it is a diameter of this circle passing through this. Clear? So which means this and this would be equal.
sorry, which means this angle and this angle would be equal, है ना? So you can say this कि okay, we have a unique this thing, which means we have a fixed radius. The same is true cyclically for all the three. So we can say yes, all the sides are creating a perpendicular bisector and they are meeting at one point, that is called center, and that is have the equal distance, because we have already proved in the chord. ऐसे ही बनेगा ना ट्रायंगल. तो देखो क्या होगा, है ना? So by this you can say perpendicular bisectors of a triangle meets at one point, that is center of the circle circumscribing the triangle. Clear? So you can say three non-collinear points will always create a triangle. Three non-collinear points will always create a triangle, and three non-collinear points, जो three triangles होंगे, basically becomes a chord जिसके perpendicular bisector will always meet, and that point is called circumcenter. What we call this point as circumcenter, and that circle is called circumcircle. Understood? Okay. What is the next point we discussed? The angle subtended by an arc at the center is double than we have already proved. Angles in the same segment of a circle are equal, we have proved. If a line segment joining two points subtend equal angles at two other points lying on the same side of the line, then the 4 points are if a line, let's write it, what it's saying. If a line joining two points if I say AB and I say, they say CD, what does it say about? It means C and D is a part of major sector. If I say they are making the same angle, which means they are a part of major sector, right? Which means these 3 points is also a part of the same circle, and these 3 is also the part of the same circle, which proves that ABCD is lying on the same circle, and hence it is called concyclic quadrilateral. So what is the definition of concyclic quadrilateral? Simple quadrilateral lying on the circle. Simple, any 4 points of a circle would create cyclic quadrilateral. Create. And we have already proved that the sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree. Okay, good. If sum of a pair of opposite angles of a quadrilateral is 180 degree, the quadrilateral is cyclic. We have proved it. Now coming to the very most important part of class 10th, the tangents, right? So it was just a revision of class 9 what we have already done. है ना? So what is the only portion left in class 10th is the tangent. So we have to focus really on tangent. Now what is the tangent? देखो सिंपल है, ये तुम्हारा सर्कल है, राइट? एंड लेट्स से this is a line which is just touching the circle, so we call this line as tangent. Now tell me, this is the point of contact. Why this is making 90 degree? Will it make 90 degree? Why? The shortest distance from the center to a Because this line is just touching at A, so rest of the points are outside the circle. Rest of the points are outside the circle, which means जब भी आप करोगे it will be greater than radius. It will be
So the shortest distance is, this is the only shortest distance. And what is the definition of shortest distance? That it is perpendicular. So it will be 90 degree. Clear? So tangent touching at this would be making 90 degree. Now let's say दूसरा tangent आया, right, from the same point. Clear? So let's say this is your point of contact, and let's say this is your point P. So what will be this? $90. Clear? Now this is your radius R, this is your radius R, and this is your common side. Right? Now observe triangle, this triangle and this triangle. What you see that this is equal to this, and this is common, and this is 90. So what is that? Are they congruent? Yes, it means they are, by RHS they are congruent, which means this is the story. Now what can you say about this quadrilateral OAPB? It's a cyclic quadrilateral. So is it having a unique circle? Yes, of course, it is having a unique circle, which will be something like right. Now just tell me what this cyclic quadrilateral is exactly. इसका कोई और नाम है क्या इस cyclic quadrilateral का? Kite. What is kite? Which means if you fuse two isosceles triangle with a common base, you fuse two isosceles triangle with a common base. So if you observe this, this is the base, right? This is the base. Now you have a isosceles triangle, you have another isosceles triangle. So you can say this, that this is one isosceles triangle, and though both isosceles triangle are sharing the common base, which means it is a kite. And if I say these two isosceles triangles are congruent, then this kite will become rhombus. So basically what is a rhombus? Rhombus is a parallelogram whose all sides are equal, or you can say it's a kite with two congruent isosceles triangle, right? Okay. Now just tell me, ये और ये triangle, these two triangles are congruent? How can you say this? ये आर आर हो गया, फिर which angles are equal? कौन सा? ये एंगल इक्वल है, और क्या है? This is a common side, right? So we can say these two are congruent. So I can say this is 90-90, right? This length and this length. Can you find this length? If I give you this length and if I give you this length, can you find this length? By what? By Pythagoras theorem. Okay, very good. So it's a very special thing in IIT JEE. There is a lot of questions on this figure. Okay. So right now I am just making you understand this figure. Yeah, इस figure को आप understand कर रहे हो, इस figure की properties को देख रहे हो, right? Maybe we'll be in future learning rest of the tools in which we have to find how to find this length, how to find this length without giving other further informations. So we'll be focusing this also, right? यहाँ तक कोई issue नहीं है आपको? Okay? So यहाँ तक tangent की story आपकी clear है? Done? कोई issue नहीं है? So as far as properties concerned, we have, okay, can I say these two lengths are equal? So which means length of tangents from a common point, they will be equal, right? यहाँ तक आपको there was, this is the only stuff which you need to keep in your head. तो आपको क्या क्या चीज सीखा? Just let's recap everything. So basically first we understood what is the definition of circle, right? Everybody understand what is the definition of circle. Now we understood there is a fixed point. We know what is center, right? Then we understood what is radius. Then we also understood chord. Then we also understood central angle. Then we also understood inscribed angle.
then we understood 3 non-collinear points would always create a, why? Because perpendicular bisectors of a triangle, they are concurrent, and by property of congruency we can say all are equidistant, which means they are following that same definition of circle. Fixed, all the 3 vertices are equidistant from fixed point. So we are going to call this fixed point as circumcenter, and the circle circumscribing that triangle would be called circumcircle, right? यहाँ तक कोई doubt नहीं था. फिर उसके बाद we have already proved what is central angle. We have already proved what is inscribed angle, and we know the relation between central angle and inscribed angle, right? We know half of central angle is my inscribed angle, right? उसके बाद हमने पढ़ा cyclic quadrilateral. What is cyclic quadrilateral? Just 4 points on a circle. That's it. Now we understood by the property of inscribed angle that the one of the inscribed angle is in major segment, one is on the minor segment, and we understood through the calculations that both of them are supplementary, which means they are creating 180 degrees, right? यहाँ तक सब कुछ clear था, and then we proceeded further about the tangent and we learned some properties. So basically circle theory wise बहुत ही आसान chapter है, but when it comes to the application there is a hell lot of geometry and hell lot of interpretation is required, right? तो जैसे हम questions को observe करेंगे ना, तो शुरू में we will observe the questions which are very easy, which can easily be handled directly property, लेकिन sometimes the questions get little murkier, जहाँ पे properties 2-3 fuse करेगी, जहाँ पे आपको total symmetry and properties को सोचना होगा, imagine करना होगा. And as far as circle की geometry is concerned, it's very important for 11th 12th as well. Okay, so circle is one of the most important topic. So please be focused कि आज हमने क्या किया, because this is the basic foundation. Okay, so we'll just discuss few questions. Just tell me, first question is, just read the first question. In the figure, OA is 5 centimeter, right? So radius of the circle is given. And AB is 8 centimeter, right? And OD is perpendicular to AB, which means OC is perpendicular bisector. Then CD is equal to. Now how to find CD? It's a very good question. Radius minus OC. And how to find OC? Okay, how to find what is the radius here? 5, and AC is actually equal to 4. So basically that will become 3. So 5 minus 3 is 2. Very easy question, right? Good. Second question is also very easy. 40 degree, I hope. Okay, third question. 45. Everybody got it? Because it's a diameter. So diameter is basically a chord. So it is sustaining one angle there and one angle there, and both are symmetrical. So it will always create 90, or you can say the angle made by chord at the center is 180 degree. So half of 180 degree is 90 degree. Clear? In the figure, okay, it is also, we have to find angle ACB. So always understand that will be complementary to each other. They will always sum up to 90 degree. ये property देखो. They will always, इसमें कोई calculation नहीं चाहिए. If I say this is M, what will be this? 90 minus M. क्यों? क्योंकि ये M है, तो ये क्या हो गया? Clear? So I can directly say 50 degree, right? So these are very easy ones. So you can try. Okay, let's do true and false. Just do 10th. Through 3 collinear points, just tell me true and false. Through 3 collinear points, a circle can be drawn. Why false? Why? We can draw the unique circle from a non. Right, but why we can't create? This would be your 3 unique circle. 3 unique, 3 collinear points, right? 3 collinear points. Now, yes, their perpendicular bisectors would be parallel. They will meet at infinity.
So basically line is a circle of infinite radius, right? So it means we cannot say that 3 collinear points will. Understood? Why only one girl replied to this answer? Why not you people? We have already discussed that 3 points will create at least 3 sides or 2 sides. So their perpendicular bisector must confuse एक तरीके से fuse करना चाहिए, and they cannot fuse together because they are parallel lines. You haven't done a class 9 geometry axioms and all? हाँ, Euclid's geometry के rules आपको पता है ना? Okay. Okay, let's think of 16. In the figure, just try this. In the figure, angle AOB is diameter, right? And angle ADC is 120 degree. Just tell me, and then they say angle CAB is 30 degree. Just tell me true or false. Why? Why? Because angle ABC will be 60 degree as cyclic coordinator. Angle? ABC. It's false. No, it's not a cyclic quadrilateral. How can you say it's a cyclic? It's false. Why? Because when we join the AC and CB, the AOB is obtained an angle 90 degree, and after that we can calculate each angle CAB and CBA is equal to 45 degrees. Sir, it's true. Sir, these are the properties of second quadrant. What's go ahead? Sir, it's So I mean that True. How? C and O, then we can form a cyclic quadrilateral and check its properties. So it's true. Sir, in quadrilateral ADCB. Let's say this is your circle, right? And this is your diameter, and the figure is AOB, right? And this is your D, this is your C and E, right? These are the 5 sides, right? And they say this is 120 degree, and they say this is angle CAB. What is angle CAB? Okay, cab. So they say this is 30 degree. Why true? Sir, join CB. If I join this, So cyclic Angle coordinator. C is equals to 90 degree. good, this is 90 degree, 90 plus 30 is equals to 120 and 120 plus 120 is equals to 60 degree. and which means, It is a cyclic quadrilateral. 120 so it's perfect true. Clear? Understood? You just have to connect the dots and your answer, you will get the answer. Clear? See, was it difficult? What we did, we simply we just connected the lines, and we saw simply, okay, accepted 30 degrees. So it was, obviously we know this is 90 degrees, so this is 30 degree, it has to be 60 degree, and of course we know this fourth thing is creating, they are cyclic quadrilateral definitely, and this is 60 degree, fine. So it goes true. अगर ये contradict करता तो उसका क्या मतलब होता कि false है. Clear? Understood? So you have to be very smart in true and false question. They are very tricky. Okay. Just let's go to if 27, question number 27, see. If non-parallel sides of a trapezium are equal, prove that it is cyclic. How can you prove that? What is a trapezium? Trapezium is basically, this is your trapezium. And when you say this is equal, which means
No, trapezium is not a parallelogram. Non-parallel sides, they are exactly saying that their non-parallel sides are equal, right? Trapezium is not a parallelogram, but parallelogram is a trapezium. Okay. So these two angles will be equal, that's for sure. है ना? So what do you have to prove? So this would be the same angle. If I call this theta, this is theta. This is 180 degree minus theta. So this is theta. So yes, they are cyclic. Clear? So there are many questions. Let's discuss few of. Do 32. Y is equal to? Everyone is getting the same answer? Let's do it. This is your circle, right? And this is your diameter, right? A, and this is your O, and this is your BC, and this is your D, which is making 90 degrees. So you have a quarter circle here, and this is 30 degree, and this is Y, and this is X. Okay, now just tell me, if this is Y, what is this? 2Y, right? What else? If I connect this, can I connect this? Okay. This 2Y, this is Y. 2Y is equal to? How can we say that 2Y is equal to 30? Okay, these are equal, right? So Y is 15 degree. What else? How to find X now? So this is 15 degree. Twice of angle ABD is equal to angle AOD. Twice of angle? ABD is equal to angle AOD. Twice of angle ABD. ABD is equal to? Angle AOD. Perfect. है ना? Clear? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया?
this angle, just a sec, क्या कर रहे थे हम? Angle ABD is equal to twice of angle ABD is equal to angle AOD. हाँ, right. So this angle is half of this. So this will be, this is basically 90 plus 2y. So it will become 45 plus y, right? This is 90, no? So this angle is 90 plus 2y. So this would be angle ABD, no? ये देखो, ये हो गया ना? Okay, sir, right. This is 45. Okay, clear? So this becomes 45 plus y, 60. Basically, this becomes 60. This is 60 degree. And then which is perpendicular? AO is perpendicular to? Okay, right. We missed it. So we can say this is 30 degree. Right? Okay? Clear? समझ में आया सबको? ठीक है, it's all about finding the pieces. आपके पास information है, you have certain thing, you just have to look into it, observe what is missing, you just have to fix the missing point and you have to जैसे जब भी क्वेश्चन में हो, जैसे हम यहाँ पे मिस क्यों कर रहे थे, we haven't written given, नहीं तो given क्लास क्वेश्चन में ही ये लिखा हुआ था कि this is perpendicular, right? In the information ये missing था, हमने मिस कर दिया था नोट करना, right? Clear? That is why we were not able to see this. Clear? Okay. Now let's do few question more. Let's do 57. The tangent at a point C of a circle and diameter AB when extended intersect at P. Find angle CBA. There is a hint given, join C with center O. Everybody got? Okay, so how many of you couldn't get the answer? Just tell me. You have this thing as, this is your figure, right? And it says this, that P, B, A, C, O, C, and they say this, right? Now you know PC is tangent, PC is a tangent, right? So it will create PC would create, this is 90 degree, right? है ना? And you know this is also 90 degree, which means
and PCA is 110 degree. What is PCA? 110 degree. So this is 20 degree. So it will also be. यही निकालना था क्या? बहुत ही आसान था. CBA निकालना था. CB. So this is 20 degree, right? The angle CAB is 20 degree. CAB. यार काफी हॉच पॉच डायग्राम बन रहा है. Just let me draw it again. So you have this circle, right? And then you have this diameter, which is BA, and you have this tangent, right? C, and you have this angle. Now this is CB. AB is a chord of a circle with center O, AS is diameter, AT is tangent. What is tangent? Which question was? 57, sorry. Tangent at a point C of a circle and diameter AB, clear, with extended intersect at P, and angle PCA is 110 degree. Angle PCA is 110 degree. Find angle CBA. You have to find this angle, right? This is my target. Now I know this is my center, so I can say this is 90 degree, right? So I can directly say this is 20 degree. I know this is also 20 degree. Now what else can I say, predict about it? PAC is 20 degree. PAC is 20 degree. PAC is 20 degree. CO and BO are radius, so angle BCO is equal to angle CBO. PAC is 20 degree. let's call this angle as x, this angle is y. Now say z. अब बताओ कौन सा angle? Sir, Y is equal to 20 degree. Angle y is equal to 20 degree. Yes, sir. How can we say this? Okay, right? Perfect, perfect, perfect. Clear? समझ में आ गया? Good. Or you can extend this also, and then also you can talk about it, right? Z would be equal to x plus 20, right? Z would be equal to x plus 20, and this is 90 degree. So this is 90 minus Z, and Z is equal to x plus 20 degree, है ना? We have to find CBA. Z निकालना है हमें, and we can say this is 45 minus Z. Sorry, 180 minus Z. 80 minus 2Z. This angle is actually equal to वो तो होगा ही. तुम लोग केस को इक्वल कह रहे हो. एंगल ए Yes, sir. दिस इज, ये एंगल कैसे निकल के आ गया? दे रखा है क्या? अच्छा, दिस इज ओके, राइट राइट राइट, आई गॉट इट. ठीक है, अंडरस्टूड? पक्का? सबको समझ में आ गया? गुड. Okay, now coming to the volume and surface area. Clear? Now if you observe this chapter, volume and surface area, you have already understood two dimensions chapters, right? You have already studied the mensuration part of 2 dimensions. Clear? You know what is area? What is area? तो हम लोग सबसे पहले स्टोरी स्टार्ट हुई थी हमारी रेक्टेंगल से. We understood rectangle is length into breadth. Then we went to the parallelogram. जब हमने parallelogram को break किया and then we connected
वी सॉ पैरेललोग्राम का एरिया उसके कॉरस्पॉन्डिंग रेक्टेंगल के बराबर था. सो वी कॉल्ड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एज बेस इंटू हाइट. नाउ आफ्टर बेस इंटू हाइट वी बाइसेक्टेड. जब हमने ट्राइंगल को मतलब जब हमने पैरेललोग्राम के इसको जब कनेक्ट किया तो क्या बन गया? दो ट्राइंगल, दे वर कॉन्ग्रुएंट. सो वी कॉल्ड एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. फिर उसके बाद हमारे पास आया इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसको हमने कैसे प्रूफ किया? a by 2 a. So we just said this is basically root 3 by, है ना, root 3 by 2a. तो क्या नहीं है ना. सो एरिया क्या हो गया? हाफ इंटू रूट 3 by 2a इंटू a. दैट वॉज रूट 3 by 4 a स्क्वायर, राइट. उसके बाद हमने ये पढ़ा था हेरोन्स फॉर्मूला सबने. क्या होता है? अंडर रूट. क्लियर? ये सबको पता है. नाउ जस्ट टेल मी ये आता कैसे? हाउ मेनी ऑफ यू नो द प्रूफ ऑफ दिस? एनीबडी? तुम लोग सब भूल जाते हो हमेशा. हाउ मेनी ऑफ यू नो द प्रूफ? नोबडी नोज. कोई भी नहीं जानता है? नो. ओके, लेट्स डू दिस. अ क्विक प्रूफ. Let's say this is your ABC, right? ये ट्राइंगल दिख रहा है ABC का. Okay. Now I'll call this as A, this as B, this as C, right? This is by scalene triangle. Now एक बात पहले मैं इधर तुम्हें दिख के बता दूं. S क्या होता है? S माइनस A क्या होता है? S माइनस B क्या होता है? एंड S माइनस C क्या होता है? ये चारों पता है, राइट? उसके बाद आप देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? सो इफ आई कॉल दिस एज x, दिस बिकम्स, एंड दिस इज h. नाउ इफ आई से एरिया of this triangle is going to be half AH, right? Area of triangle is half into. Now if I square this up, this will become. Why did I square it up? Because I have brought h and x on my own, and only Pythagoras theorem will help me to get rid of my h. So I know h square plus x square is equal to c square. Everybody got this? कोई ऐसा बच्चा जो ये नहीं देख पाया? And then we can say h square plus a minus x का whole square is equal to. Everybody got this? Now I have to eliminate my h square, so I can say my h square is equal to c square minus x square, which I can write my c minus x into c plus x. Now the question is, what is x? Now I can say h square is actually equal to, and I can say h square is equal to a minus क्या था? ठीक है. सो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गए. आई कैन सॉल्व दिस इक्वेशन नाउ. सो आई कैन से c स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2ax. अब देखो क्या हो रहा है. c स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस. ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं किसी को? आई कैन से दिस एंड दिस विल गो ऑफ. सो आई कैन से 2ax इज एक्चुअली इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. So I can say x is basically equal to a square plus c square minus b square. देखो अब पीसेस कनेक्ट करने का टाइम आ गया है.
we have found my x. Now this is going to be little complicated, little hodgepodge, लेकिन हम तुरंत कैलकुलेशन से ऑब्जर्व कर लेंगे क्योंकि वी हैव ऑलरेडी लर्न मेनी identities of polynomial. Everybody understand a square minus b square? Everybody understand a minus b का whole square? Everybody understand a plus b का whole square? बस वही यूज होगा और ये फाइनली हो जाएगा. देखो कैसे. So I can say 1 by 4 a square into c minus, I will bring that a square plus c square minus b square by 2a, right, into c plus a square plus c square minus b square by 2a. यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को? देखो इसको ऑब्जर्व करो, ये ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा? 2ac, और ये माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, राइट? अब इधर देखो 2ac प्लस ए, राइट? ये क्या है? a प्लस सी का होल स्क्वायर. और इसको अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये बेसिकली हो जाएगा, इसको रीराइट करोगे तो ऐसे लिखोगे इसको, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac. So you understand this? You recognize this. So you can simply write this as, and you can simply write this as, now you know this is the difference of two squares and this is the difference of two squares. So you can say 1 by 4 a square into b minus a plus c into b plus a minus c, right? And you can write this as, इधर 2a होगा, a plus c minus b into a plus c plus b, and 2a turn out to be 4a square. So a square and a square gone. So you are left with a plus b plus c into a plus b plus c minus a into a plus c minus b into a plus b minus c over 16. That is 2, 2, 2, 2. 16 is nothing but, what is this? S minus a, s minus b, s minus c. So you can say area of square is, square of the area of any triangle is, right? This is the story. Clear? Understood or not understood? Pakka? Now after this we'll go to quadrilaterals. You have already found the area of rectangle, you have already found the area of parallelogram, you have already found the area of squares. What is left is rhombus and trapezium. You know the formula of rhombus and trapezium? You know how it is coming up? Rhombus turns out to be half into d1 into d2 simply by the property that the diagonals are the perpendicular bisector to each other and they are also the angle bisector. So you can say half into d1 into d2, right? And you have already proved the area of trapezium. Trapezium is half into sum of parallel sides into height. इसका proof पता है सबको? है ना? नहीं पता है? Just a 1 minute proof. देखो क्या है? This is your trapezium, right? AB, CD, clear? Okay, now I can drop this, I can drop this. Okay, drop. Okay, if I call this as X, if this is A, this is B. If I call this A, this is X, let's say this is Y. So basically B is equal to X plus A plus Y. What is the area of this right triangle? Half, I'll call this as H, half HX. इसका क्या होगा? AH, और ये क्या होगा? हाफ HY. Now कॉमन क्या है सब में? H by 2 कॉमन है, निकाल लो. क्या बचा? X plus Y plus 2A, that is A plus A, है ना? ये 2A हो गया. और ये क्या है? B. So you can say area of trapezium is half into sum of parallel sides into
height. Clear? Now coming to the 3 dimension. बेसिकली अब तक हम क्या कह रहे थे, मेंसुरेशन में हम लोग 3 चीजें पढ़ते हैं कि हाउ टू फाइंड द लेंथ. वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड द लेंथ. देन वी अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड द एरिया. Now it's basically we are going into the 3 dimensions. So here what is important is totally the visualization, how you are going to visualize your things, right? Now let's start the story with rectangle again. आपने rectangle से कहानी शुरू की थी, तो वॉल्यूम की कहानी भी rectangle से शुरू करते हैं. Let's have a rectangular plate. आपने एक rectangular plate ले आया, उसके ऊपर एक और rectangular plate रख दो, सेम, फिर सेम, फिर सेम, ऐसे करते करते क्या बना, एक शेप बना जो बेसिकली एक रेक्टेंगल के. सो वी आर गोइंग टू कॉल दैट शेप एज बॉक्स शेप, जिसको हम क्या कहेंगे, क्यूबॉइड. इसके पास 3 डायमेंशंस हैं. क्या क्या डायमेंशंस हैं? वन, इट हैज लेंथ एंड ब्रेथ. व्हेन इट वाज 2 डायमेंशन, इट हैज ओनली 2 डायमेंशंस, लेंथ एंड ब्रेथ. नाउ द थर्ड वन हैज बीन एडेड, हाइट, राइट? नाउ इन 3D वी आर मोस्टली इंटरेस्टेड इन वॉल्यूम एंड द surface areas. We are mostly interested in the volume and surface area. So if you observe this, the volume turns out to be L into B into H, right? L into B into H. That is very easy, simple. Because क्यों, देखो जब हम लोग एरिया पढ़ रहे थे तो why did we call the area of rectangle as length into breadth? Why did we call the area of rectangle as length into breadth? Anyone? Why did we call the basic? ये बेस बहुत जरूरी है. नॉर्मली लोग वॉल्यूम और एरिया के कॉन्सेप्ट इसी वजह से नहीं समझ पाते हैं. जब आपको कहते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये रेक्टेंगल है और ये कुछ स्पेस ले रहा है. अब इस स्पेस को हम क्वांटाइज कैसे करें? दैट इज द क्वेश्चन कि इस स्पेस को हम क्वांटाइज कैसे करें. सो वी टेक कि चलो ठीक है, आई एम गोइंग टू कंसिडर दिस एज 1 यूनिट स्क्वायर. ठीक है, इसमें आपने 1 यूनिट का ले लिया एंड यू सेड दिस थिंग इज माई रिप्रेजेंटिंग 1 यूनिट स्क्वायर ऑफ एरिया. सो व्हाट यू स्टार्टेड डूइंग, पेस्टिंग इट. यहां पे पेस्ट किया एंड देन यू काउंटेड द नंबर. आपने नंबर काउंट किया एंड देन इट टर्न आउट टू बी कि जितना ये है और जितना ये है, सो इट टर्न आउट टू बी लेंथ इनटू ब्रेथ. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द वॉल्यूम, नाउ वी हैव टू डिफाइन अ सर्टेन स्पेस, माय सर्टेन स्पेस, जिससे मैं काउंट करना सीखूंगा. तो आई विल से दिस, एक छोटा सा क्यूब जिसके सारे एज 1 यूनिट के हैं, एंड आई विल कॉल दैट एज 1 यूनिट सेंटीमीटर क्यूब. अब आपके पास एक बॉक्स आ गया है. लेट्स से ये तुम्हारा जो है इट्स अ बेसिकली अ परफेक्ट क्यूबॉइड. डोंट कंसीडर दिस पिलर्स, राइट? अब क्या हो रहा है कि यहां पे भी रेक्टेंगल है एंड देन दिस रेक्टेंगल हैज बीन पुल्ड अप टिल हियर. नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक एक क्यूब, जैसे लेट्स से यहां पे एक क्यूब रखा, कंसीडर दिस एज क्यूब, राइट? है ना? ऐसे देखो, ये consider this as 1 unit, this as 1 unit, this as 1 unit. perfect. तो ऐसा ही क्यूब बनेगा, ऐसे स्पेस बनने लगे, और ऐसे जितने स्पेस बनेंगे दैट इज बेसिकली द वॉल्यूम ऑफ जितना भी यूनिट है, ये इतने यूनिट ऑफ दिस वॉल्यूम. नाउ वी आर गोइंग टू सी कि दिस इज बेसिकली 1 क्यूबिक. नाउ ऑब्जर्व दिस, ऐसे कितने काउंट होंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करोगे एंड देन 1 2 3 4 इससे काउंट करोगे. तो बेसिकली लेंथ इनटू ब्रेथ वुड गिव यू दिस, एंड देन ऐसे ऐसे जितने रोज बनेंगे कहां से आ गया, हाइट से. सो यू से द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. ओके, सो बेसिकली यू आर ऑब्जर्विंग 3 डायमेंशंस. इफ आई कंसीडर दिस एज ओरिजिन, दिस कॉर्नर इज ओरिजिन. आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देखा था, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. नाउ दिस इज द थर्ड एक्सिस, right? So we are going to call this as third axis and we call it z axis. Clear? So this is the volume of cuboid, length into breadth into height. Now you know cuboid had 6 faces, right? And you all know that these 6 are rectangle. One is length and breadth, one is breadth and height, one is length and height, and they are pairs, reflection, right? So you know the surface area turns out to be 2 into LB plus BH plus LH, right? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है. ओके, नाउ वॉल्यूम इज डन, वॉल्यूम इज LBH. अब बताओ तुम मुझे, दिस पॉइंट से उस पॉइंट तक अगर मैं रॉड रखता हूं, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस रॉड? Why? Why can you say that?
हाउ कैन यू हेल्प मी विजुअलाइज दिस? Now you know this is your longest pole, right? Now this is a right angle triangle. How you can construct a right angle triangle? This is your hypotenuse, this is your height, that is your height, and the diagonal of this rectangle is your base. Hypotenuse is the longest chord, right? Now how to find this diagonal? A and B, under root a square plus b square, and that is C. So the square of this would be a square plus b square plus c square. So we can say L is under root a square plus b square plus c square. That is under root L square plus b square plus h square. Can you visualize this? कोई ऐसा बच्चा जो इसे नहीं समझ पाया? पक्का? So everybody knows what is cuboid, how to find the volume, how to find the surface area. Similarly क्यूब का भी आपको पता है ना? क्यूब में L भी सब बराबर हो गया है और हमारा बेसिक यूनिट भी वही था, और उसका क्यूब में क्या हो जाएगा लेंथ इसका? Root 3a. Simple, root 3a. Clear? So cube is done, cuboid is done. Now coming to the circular disc. आप सर्कल्स हैं. अभी हमने क्या किया था? रेक्टेंगल प्लेट के ऊपर रेक्टेंगल डाल रहे थे. अब हम सर्कल के ऊपर सर्कल डालते जाएंगे. तो इट विल टर्न आउट टू बी अ तो सिलेंडर. बेसिकली दिस इज योर सिलेंडर. सो यू हैव दिस. एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है, राइट? सो अब सरफेस एरिया से कैसे निकालेंगे? यू नो दिस इज पाई आर स्क्वायर, दिस इज पाई आर स्क्वायर, एंड दिस इज द हाइट. नाउ हाउ कैन यू से द एरिया ऑफ दिस इज? व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस? द एरिया ऑफ दिस lateral surface area of this, h into 2 pi r. How can you say that h into 2 pi r? Let's say this is the rectangle. If I this is the surface area. So what is this? A rectangle whose length is 2 pi r and breadth is h. So we can say 2 pi r h. Clear or not clear? So the lateral surface area is 2 pi r h, and the what do you call that as? Bottom surface area as pi r square plus pi r square. So you have the total surface area as 2 pi r square plus 2 pi r h. Clear यहाँ तक? Now you know the volume is basically base का जो volume है, area है, उससे जितना height पे जा रहा है. So what is the volume of this? Pi r square into h. So cylinder is done. ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. Now come to the fourth one. अब क्या हो रहा है कि आप जो सर्कल है, सर्कुलर प्लेट्स है ना, अब सर्कल प्लेट्स के ऊपर सर्कल प्लेट्स डाल रहे थे, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं था. बट नाउ क्या हो रहा है कि सर्कल प्लेट्स के ऊपर दूसरा सर्कल प्लेट्स डाल रहे हैं, फिर एक और सर्कल प्लेट्स डाल रहे हैं, लेकिन सबका रेडियस क्या कर रहे हैं आप? रिड्यूस कर रहे हैं. तो क्या बनेगा? क्यों स्फेयर भी तो बन सकता है. मतलब देखो मैं रेडियस घटा रहा हूं, दोनों का छोटा छोटा कर रहा हूं, तो एक टाइम में बन रहा है कोन और एक टाइम में बन रहा है स्फेयर. कब बन रहा है कोन और कब बन रहा है स्फेयर? आप लोगों ने क्या कहते हैं पॉलिनोमियल पढ़ा है सबने पॉलिनोमियल? अच्छा, आप लोगों ने लॉज ऑफ मोशन भी पढ़ा होगा फिजिक्स में. ओके, आपने ग्राफ भी स्केच किया होगा पॉलिनोमियल में, और आपने लॉज ऑफ मोशन में भी ग्राफ स्केच किया होगा. आपको ये पता होगा कि जब आप बॉल फेंकते हो तो पैराबोलिक पाथ बनता है, और जब चीजें v इजिकल टू यू प्लस एटी ड्रॉ करते हो तो स्ट्रेट लाइन बनता है, राइट? जब आप y इजिकल टू एक्स लाइन ड्रॉ करते हो तो स्ट्रेट लाइन, और जब आप क्या कहते हैं y इजिकल टू एक्स स्क्वायर बनाते हो तो कर्व. ठीक है, जब आप जब सर्कल के प्लेट्स डाल रहे हो, उसकी जब रेडियस, जब कोन को आपको साइड, कोन को अगर मैं ऐसे बनाऊं तो कैसा बनता है? कोन को अगर मैं 2D पे बनाऊं तो ऐसा बनेगा, और इसको बनाऊंगा तो हेमिस्फेयर या जो भी है, मतलब समझ लो अभी हेमिस्फेयर की तरह ही देखो, तो ऐसा बनेगा. दोनों तो सर्कुलर प्लेट्स ही रख रहे हैं ना, राइट? ये क्या बन रहा है? ये y इक्वल टू एक्स जैसा कुछ बन रहा है, लीनियर बन रहा है, और ये क्या बन रहा है? 2 डिग्री बन रहा है. तो बेसिकली क्या हो रहा है, इसकी जो रेडियस है, दोनों की रेडियस घटाई जा रही है, लेकिन इसकी रेडियस का जो रेट है
वो लीनियर है, लीनियरली आप घट रहे हैं। जितना आप इस जैसे अब जो आप वो सबको देखिए जो कुम्हार लोग काम करते हैं तो उनकी स्पीड चलती रहती है, राइट, और वो हाथ अकॉर्डिंगली शेप देते रहते हैं, और वो शेप जो देना चाहते हैं उसे स्पीड से वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर आपका जो रेट है कांस्टेंट है, लीनियर है, जैसे एक के बाद एक घट रहा, दो के बाद दो, तीन, चार, लीनियर 1 2 3 के फॉर्म में, तो आपको क्या बन के आता है, कोन। और जब आप बहुत तेजी से घटाते हो, 2 डिग्री पे घटाते हो जल्दी से, है ना, जैसे पैराबोला भागता है, जब y = x² में आप पैराबोला ड्रॉ करते हो तो पैराबोला भागता है ना, और लीनियर क्या होता है, वो स्टीडी भागता है, जैसे x बढ़ेगा उतना y बढ़ेगा, जितना x बढ़ेगा उतना y बढ़ेगा। तो हर इंस्टेंट पे ये लीनियरली घटता है और ये हर इंस्टेंट पे पैराबोलिकली घटता है। तो ये क्या शेप बन जाता है, स्फेयर। हेमिस्फेयर का लो, हेमिस्फेयर को 2 बार कर दो तो स्फेयर हो जाएगा, और इस क्या बन जाता है, ये कोन। ओके, इसकी जो वॉल्यूम ये सब है कि आप कैलकुलस जब पढ़िएगा 12th में तब एक्चुअली इसको डिराइव कर सकते हैं। तो फॉर अ टाइम बिंग हम लोग कैलकुलस तो नहीं पढ़ रहे हैं, तो अभी हम लोग सिंपल इस चीज के फॉर्मूले को देखेंगे कि फॉर्मूला है क्या। तो जब हम कोन की बात करते हैं तो कोन का डायमेंशन कुछ ऐसा होता है, आपके जो पेंसिल का टिप पॉइंट है वो कोन है, और जब पूरे पेन को देखते हैं तो कोन प्लस सिलेंडर बन जाता है, राइट। ये जो लैटरल पार्ट है इसे हम कहते हैं स्लांट हाइट। क्या कहते हैं इसे हम, स्लांट हाइट। और ये जो है इसे क्या कहते हैं हम, हाइट। और इसे क्या कहते हैं, रेडियस। सो यू हैव बेसिकली 2 surface, one is the bottom surface circular and this one is your lateral surface, clear। जब आप lateral surface को देखते हो तो इसका क्या होता है सरफेस एरिया, इसका तो आपको पता चल गया πr², राइट। इसको हम कहते हैं πrl। ये आपका कैलकुलस से आता है ये चीज, क्लियर। तो अभी फॉर अ टाइमिंग विल जस्ट सी दैट दिस इज πrl, क्लियर। उसके बाद आप देखिएगा जो ये वॉल्यूम है ये बेसिकली उस पे घट रहा है, इट्स जस्ट रिड्यूसिंग ऑन लीनियरली। तो इसकी जो वॉल्यूम होती है वो क्या हो जाता है, आपने कैलकुलस, किसी ने थोड़ा बहुत कैलकुलस पढ़ा है, नहीं, थोड़ा बहुत भी किसी ने कैलकुलस नहीं पढ़ा है, इंटीग्रेशन थोड़ा भी नहीं पढ़ा है, ओके कोई नहीं। किसी ने भी, तुमने किसी ने भी थोड़ा सा इंटीग्रेशन पढ़ा है, x² को इंटीग्रेट करना आता है, क्या होता है, नहीं, ओके छोड़ो। तो अब क्या हो रहा है, πr² है, अब ये h हाइट के ऊपर बढ़ रहा है। तुम इस तरीके से भी सोच सकते हो कि ऐसे 3 कोन मिलके सिलेंडर बना देंगे, है ना, या यू कैन से व्हाट इज द वॉल्यूम, πr² h, क्लियर। तो अभी फॉर अ टाइमिंग द फॉर्मूला इज सफिशिएंट, जस्ट कीप इन माइंड, ओके। अदरवाइज एक सिंपल बात कह देता हूं, पिरामिड, पिरामिड जानते हो क्या होता है, क्या होता है, जब भी वो ऐसा कुछ हो, है ना, जब आपको ऊपर पिरामिड बहुत सारे शेप के हो सकते हैं, आपका रेक्टेंगुलर पिरामिड हो सकता है, आपका स्क्वायर पिरामिड हो सकता है, तो मतलब बेस कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी सर्कल। अगर ट्रायंगल बन जाता है तो टेट्राहेड्रन हो जाता है ना, बेस टेट्राहेड्रन। तो ये बात हमेशा याद रखो, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, कौन कौन से पिरामिड होते हैं, कोन इज ऑल्सो अ पिरामिड, जिसका बेस क्या है, सर्कल, जिसका बेस अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर पिरामिड, जिसका बेस अगर ट्रायंगल है तो टेट्राहेड्रन। तो यू नो व्हाट इज अ पिरामिड, बेसिकली जिसका एपेक्स होता है, जिसका एपेक्स होता है, राइट, उसको हम पिरामिड कहते हैं। वॉल्यूम ऑफ एनी पिरामिड, वॉल्यूम ऑफ एनी पिरामिड इज इक्वल टू 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू, okay, so what is the area here, πr² and h, so we call it 1/3 πr² h। प्लीज ये याद रखिएगा, ये आपको फ्यूचर में काम आएगा। so volume of pyramid is 1/3 into area of base into height। ना आप इस कोन को पैरेलली कट कर दो, क्या कर दिया आपने,
तो what you got? You got this trapezium shape thing, a bucket shape और a shuttlecock का जो ऊपर वाला पार्ट होता है फेदर, ये किस शेप में होता है? फ्रस्टम. वी कॉल इट फ्रस्टम ऑफ अ कोन. तो हाउ टू क्रिएट अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन? यू जस्ट हैव टू स्लाइस ऑफ अ स्मॉलर कोन. तो जो बाकी का जो बचेगा पार्ट, दैट बिकम्स अ फ्रस्टम. नाउ इट्स वेरी इजी टू से. नाउ लेट्स से this is small r and this is capital R, right? Let's say the frustum of height is h. I can call this height as capital H. Clear? Can I say volume of frustum is the volume of the bigger cone minus volume of smaller cone? So I can say 1 by 3 pi r square h minus 1 by 3 pi r square क्या होगा? कैपिटल H माइनस H. यहां तक कोई डाउट नहीं है? नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज कैपिटल H? हाउ टू फाइंड कैपिटल H? वी नो this triangle and this triangle are similar, right? So I can say this is H minus H, so I can say capital H upon H minus H is equal to capital R upon small r, or vice versa. We can say H minus H upon H is equal to R by R. So I can say 1 minus H by H is R by R. So I can say H by H is, so I can say H is basically RH by, right? I can say this, है ना? तो I just have to, now H minus H क्या होगा फिर? RH by R minus R minus H, ये होगा. सो आई कैन से R माइनस R प्लस R बाई R. ये समझ में आया सबको? समझ में आया? H कॉमन ले लिया, R अपॉन R माइनस R माइनस 1, सो विल टर्न आउट टू बी R H बाई R माइनस R. क्लियर? सो आई जस्ट फीड इट हेयर. तो क्या बन गया? 1 बाई 3 पाई R स्क्वायर R H अपॉन R माइनस R माइनस 1 बाई 3 पाई R स्क्वायर R H R माइनस R. ना इन दोनों में कॉमन क्या है? 1 बाई 3 पाई R माइनस R. सो आई कैन से पाई बाई 3 R माइनस R कॉमन ले लिया, बचा क्या? R क्यूब माइनस, व्हाट इज A क्यूब माइनस B क्यूब? Why this so much confusion? I'll just, मैं थोड़ी देर में इसको सारे को डिराइव कराता हूँ. So I can say this is basically pi by 3 R square plus R square plus RR. Right? Understood? अभी मैं confusion आप लोग का दूर करूँगा. Clear? यहाँ तक कोई problem नहीं है? Okay, now. So we have understood how to find volume of frustum. Now tell me, what would be the lateral surface of this frustum? Lateral surface area of the bigger cone minus lateral surface area of the smaller cone would be equal to the lateral surface area of frustum. So this would be basically equal to pi R L minus pi R L minus L. If this is L, this is L minus L, है ना? क्लियर? अब हमें किससे छुटकारा पाना है? कैपिटल L से. है ना? कर्व सरफेस एरिया ही होगा. क्लियर? नाउ जस्ट सी व्हाट इज L. अगर मैं यहां से पैरेलल गिरा दूं तो ये क्या है?
r minus r, this is small h, so can I say my L is under root h square plus r minus whole square, right? So we have already understood what is my L. We have already understood what is my L, and how to find get rid of capital L. Simple. We know L by L minus L is equal to H by H minus H is equal to, we have sufficient information to get rid. Clear or not clear? समझ में आया? पक्का? ये कहां से आया? Just similar triangle property से. Clear? Because upper triangle would be similar to the bigger triangle. Clear? तो आपको ये सारे फॉर्मूले समझ में आ गए? ओके. नाउ कमिंग टू द आइडेंटिटीज, आप लोग, मैं देख रहा हूँ आइडेंटिटीज में थोड़े वीक पढ़ रहे हैं. I'll just see. Everybody know what is a plus b का whole square? What is a minus b का whole square? What is a plus b plus c का whole square? ये जितने आइडेंटिटीज मैं लिख रहा हूँ जिंदगी भर के लिए याद कर लो, जुबान पे आने चाहिए. सबके प्रूफ पता है ना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? नाउ व्हाट इज ए प्लस बी का होल क्यूब? एंड ए माइनस बी का होल क्यूब? ठीक है. सिंपली रिप्लेस प्लस बी बाई माइनस बी. सो यहां पे आप माइनस बी का क्यूब लिखोगे तो माइनस बी क्यूब होगा 3a इंटू माइनस बी, दैट इज माइनस 3ab एंड a प्लस. क्लियर? जहां पे आप b प्लस बी देख रहे हो वहां पे आप सिंपल माइनस बी कर दो. क्लियर? अब बताओ तुम मुझे, हाउ टू, वेयर डिड यू सी a क्यूब प्लस b क्यूब इन दीज एक्सप्रेशंस? यहां देखा? सो यू कैन से a प्लस b right. Now what is common here? बचा क्या? What is a plus b का whole square? Which is? Clear? आ गया, कुछ करना ही नहीं था. a क्यूब माइनस बी क्यूब कहां देखा था? a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab, तो क्या आया? तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab विच विल गिव यू प्लस ab. एक और चीज बताऊं, आपको जब भी ऑड पावर्स हो, यू कैन इवन फाइंड a टू द पावर 5 माइनस b टू द पावर 5. You can also find a to the power 7 minus b to the power 7. ये सबका एक पैटर्न निकल के आएगा, वो अभी हम लोग ऑब्जर्व करेंगे थोड़ी देर में. पहले हम लोग अपनी सारी आइडेंटिटीज कवर कर लेते हैं. ये सब समझ में आ गया? अब एक और बच गया है, एक आइडेंटिटी और बच गया है. कौन सा बच गया है? वो तो हो गया ना. नहीं नहीं, वो सब आसान वाले. प्लस सी क्यूब बी सी इज इक्वल टू क्या होता है? भूल गए? हाँ, कैसे आता है? चलो, ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट. मुझे नहीं पता कैसे आता है, मुझे आंसर्स, चलो मान लो मुझे आंसर्स पता ही नहीं है, बट आई डेफिनेटली नो हाउ टू हैंडल दिस. क्या होता है ये? a प्लस बी राइट.
लेकिन instead of this, can I write my a plus b as a plus b का whole cube minus 3ab into a plus b? लिख सकते हैं ना, है ना, जैसे लिखा था. अच्छा, और इसे लिख सकते हैं c cube minus 3abc. Clear? Now we have two perfect cubes. What are the two perfect cubes? So I can club them together. And इन दोनों में कॉमन क्या है? So I can club them together. Now this is basically sum of two cubes and we know how to handle cubes. X cube plus y cube क्या होता है? X plus y. फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी एक्स. ये समझ में आया? कितने को समझ में नहीं आया? ये बताओ, कितने को समझ में नहीं आया? कितने को समझ में नहीं आया? सबको समझ में आया है ना? सिंपल हमने किया, इसे मान लिया एक्स क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा? एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी एक्स, राइट. और ये हो गया माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस सी. तो अब दोनों में कॉमन क्या है? बचा क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस 3ab, राइट, है ना. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस 3ab. तो बचा क्या? बस यही तीन आइडेंटिटीज आपको याद रखने, इतने सारे आइडेंटिटीज याद रखने, तो ज़्यादा है तो नहीं, बहुत छोटे हैं. इसको बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, अदरवाइज एवरीथिंग इज इजी, राइट. तो ये सारे पॉलिनोमियल्स आपको जिंदगी भर के लिए याद रखने हैं. क्लियर और नॉट क्लियर? अच्छा, शुड आई रब इट? स्फीयर रह गया था ना. व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ, अब देखो स्फीयर क्या हो रहा है? सिंपल है, सर्कुलर डिस्क ही ऊपर की तरफ बढ़ रहा है. सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? 4/3 pi r cube, and it has only one surface, and that is the lateral surface. That is actually equal to 4 of the circles, that is 4 pi r square. अगर तुम उसको पेस्ट करोगे, सर्कल्स पे डालोगे, तो that will turn out to be 4 circles. तो 4 pi r स्क्वायर. ये सब कैलकुलस से आता है रिजल्ट्स, राइट. तो अभी बस हम लोग समझेंगे फॉर्मूला क्या है ना. जब आप तुम स्फीयर को दो हिस्से में डिवाइड करते हो तो क्या बन जाता है? हेमिस्फीयर्स, राइट. हेमिस्फीयर्स बन चुका है, तुम्हारे पास दो हेमिस्फीयर आ गए हैं, तो वॉल्यूम क्या हो गया? सिंपली स्प्लिट कर गया. तो 4/3 pi r cube हैज टर्न आउट टू बी 2/3 pi r cube. अब सरफेस दो बन गए इसके पास एक कर्व सरफेस है और एक बॉटम सरफेस है. सो बॉटम सरफेस इज pi r स्क्वायर एंड द कर्व सरफेस इज 2 pi r स्क्वायर. तो बेसिकली दैट इज 3 pi r स्क्वायर. क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके. उसके बाद दिस इज इट. अब क्या होता है कि आपके क्लास 10 में कॉम्बिनेशंस होते हैं. सिलेंडर को कोन के ऊपर रख देता है, इट क्रिएटेड दिस थिंग, और अ फ्रस्टम हैज बीन गिवन अ हेमिस्फीयर, सो इट विल टर्न आउट टू बी अ शटलकॉक. तो उसके सारे फॉर्मूले आपको फ्यूज करने होते हैं, राइट. अच्छा, व्हाट इज द क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट आपको पता है? व्हाट इज 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, और 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर, राइट. यू नो द कन्वर्जन. एवरीबडी नोज व्हाट इज मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर एंड हेक्टो, डेका, हेक्टो सब पता है. ओके, सेम. अगर उसको क्यूब कर देते हो तो 3 में चला जाएगा. तो 1 मीटर में अगर 100 सेंटीमीटर है तो 1 मीटर क्यूब में कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा? 100 इंटू 100 इंटू 100, राइट. क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके. सो नाउ यू विल हैव अ फिजिक्स क्लास. इन द नेक्स्ट क्लास व्हाट, ये जो आपके पास आपको शीट मिला है उस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए. दे आर वेरी गुड क्वेश्चंस. आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई हैव सेलेक्टेड फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, बिकॉज बोर्ड को एग्जाम पे ध्यान रखते हुए रखा था, मैंने सेलेक्ट किया था क्वेश्चंस को, राइट. नाउ नेक्स्ट क्लास में व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज नॉट ऑन बोर्ड्स but more on the foundation for IIT JEE. So what we are going to discuss is the graphs,
सो बी वेरी मच प्रिपेयर्ड, नोटबुक लेके आइए और लिखिए. आई हैव सीन पीपल जो सिर्फ सुन रहे थे, लिख नहीं रहे थे. ओके, सो नेक्स्ट क्लास में यू हैव टू नोट इट डाउन बिकॉज दीज आर द स्टफ्स जो आपको बुक में नहीं मिलेगा. मैंने इग्नोर कर दिया आज क्योंकि आई हैव गिवन यू द इंफॉर्मेशन, राइट? बट स्टिल इट्स बेटर टू राइट द नोट्स, देन ओनली यू विल बी एबल टू ग्रास्प मैक्सिमम. नाउ नेक्स्ट क्लास में आई विल बी डिस्कसिंग ग्राफ्स and then we'll be discussing trigonometry in a higher standard. जो आपने क्लास 10 तक पढ़ा है वो तो ठीक है, उसके आगे पढ़ेंगे. ओके, and then we'll also discuss little bit of PNC. We'll discuss how to count. Don't worry about permutation. We'll discuss how to count things, right? These three things, and then any specific boards topic which you feel that really needs to be covered. We'll discuss the problems of the assignments. Problem discussion. Graphs, trigonometry, counting. In counting, we'll discuss Pascal triangles. Right. Oh yes, one more important. Triangle and properties. ये आपके क्लास 10 से ऊपर क्या है? क्लास 10th वाला जो है दैट इज आपको समझ में आना चाहिए, राइट? विल डिस्कस इसके आगे की चीज़ें. क्लियर? ओके, आज मैं मोस्टली सिर्फ क्लास 10 पे ही फोकस कर रहा था क्योंकि फर्स्ट डे था, ज़्यादा डराता नहीं हूँ, ज़्यादा डराना नहीं था. ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास के लिए शुड बी रेडी फॉर इट. और सर्कल चैप्टर अच्छे से कर लीजिए, राइट? नाउ इन 5 मिनट्स आपका फिजिक्स